हेलो फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि RDBMS इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 2 PLSQL। तो इस PLSQL टॉपिक के जो है पार्ट 2 में जो नेक्स्ट 25 एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 25 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन PLSQL। तो इसके ऑप्शन ए इटरेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन बी कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। PLSQL में जो है इटरेटिव स्टेटमेंट एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ये जो है बोथ कंट्रोल स्टेटमेंट जो है यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इसके ऑप्शन है इफ देन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल जो है 3 टाइप्स है if statement in PLSQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash dash executes the corresponding code whenever a true condition is found, otherwise the condition cannot be checked again। तो इसके ऑप्शन है if then statement, ऑप्शन बी if then else statement, ऑप्शन सी if then else if statement, एंड ऑप्शन डी all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी if then else statement। If then else statement execute the corresponding code whenever condition is true found, otherwise the condition cannot be checked again। Next question है, which portion is the optional in if statement। तो इसके ऑप्शन है if, ऑप्शन बी then, ऑप्शन सी else, एंड ऑप्शन डी none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी else। Else portion is the optional in a if statement। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when if then else syntax is used। तो इसके ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, यू मे वांट टू एग्जीक्यूट one set of statement or another set। ऑप्शन बी if the condition is true then you want two statements to be executed। ऑप्शन सी as long as condition 1 is true then one set of statement will be executed, and when the condition 2 is true then another set will be executed, and option D, when the condition 1 is true one set of statement will be executed, and when both condition are false a different set of statement will be executed। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स यू मे वांट टू एग्जीक्यूट one set of statement or another set। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in absence of condition the else part of the dash dash statement will be executed। तो इसके ऑप्शन है if then else statement, ऑप्शन बी if then else if statement, ऑप्शन सी if then else if else statement, एंड ऑप्शन डी none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए if then else statement। in the absence of the condition then else part of the if then else statement will be executed। नेक्स्ट क्वेश्चन है, case statement uses which keyword to work like if statement। तो इसके ऑप्शन है into, ऑप्शन बी as, ऑप्शन सी when, एंड ऑप्शन डी in। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी when। case statement use the keyword when to work like if statement। नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluation of case statement is done dash dash। तो इसके ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी टॉप टू बॉटम, ऑप्शन सी बॉटम टू टॉप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टॉप टू बॉटम। इवैल्यूएशन ऑफ द केस स्टेटमेंट इज डन टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग PLSQL dash dash you can repeatedly execute one or more statements over and over again। तो इसके ऑप्शन है लूप्स, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी वेरिएबल्स, एंड ऑप्शन डी प्रोसीजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लूप। बाय यूजिंग PLSQL loops you can repeatedly execute one or more statement over and over again। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PLSQL loop are known as dash dash।
तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटरेटिव केस स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इंडेंटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी इंडेंटेशन केस स्टेटमेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। PL/SQL loops are also known as iterative control statements. Next question है how many types of PL/SQL loops are there? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। There are 4 loop statement in PL/SQL। तो कौन कौन से 4 kinds of loop statement है? तो बेसिक लूप, while loop, for loop एंड cursor for loop। ये जो है 4 loop statement है in PL/SQL। Next question है a dash loop in PL/SQL ensures that at least one statement is executed before the loop terminates। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए while, ऑप्शन बी for, ऑप्शन सी cursor for एंड ऑप्शन डी exit और basic loop। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी exit loop। Exit loop in a PL/SQL ensures that at least one statement is executed before the loop terminate। क्योंकि एग्जिट लूप में जो है बॉटम को जाकर जो है कंडीशन चेक की जाती है, इसलिए अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तभी जो है लूप वन टाइम जो है एग्जीक्यूट जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हाइल कंडीशन लूप स्टेटमेंट एंड लूप, ऑप्शन बी लूप स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडीशन एंड लूप, ऑप्शन सी एंड लूप व्हाइल कंडीशन लूप स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हाइल कंडीशन लूप देन स्टेटमेंट्स एंड इन लूप। ये जो है करेक्ट सिंटैक्स है ऑफ द व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली यू यूज PL/SQL डैश लूप। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केस, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी फॉर एंड ऑप्शन डी इफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर। When you want to execute series of statement repeatedly, you use for loop in PL/SQL। Next question है the counter in the PL/SQL for loop is by default incremented by dash dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी नल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1। The counter in the PL/SQL for loop is by default incremented by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is true while using PL/SQL for loop? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए the counter variable is implicitly declared in the declaration section so do not need to declare it explicitly, option B it is not necessary to explicitly increment the counter variable since it is incremented by 1, option C for loop can be exit when the exit statement but it isn't often used and option D all of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above। ये all जो स्टेटमेंट है ट्रू है फॉर द फॉर लूप इन PL/SQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which oracles does the PL/SQL continue statement is supported? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए Oracle 8G, ऑप्शन बी Oracle 9G, ऑप्शन सी Oracle 10G एंड ऑप्शन डी Oracle 11G। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी Oracle 11G। Oracle 11G supports the continue statement। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash statement in the PL/SQL allows you to jump from these statement to a specific statement label within the same subprogram within the PL/SQL block। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए jump, ऑप्शन बी go to, ऑप्शन सी continue एंड ऑप्शन डी break। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी go to statement in PL/SQL allows to jump from this statement to specific statement label within the same subprogram। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is not a PL/SQL unit। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइप, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी ट्रिगर एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेबल इज नॉट अ PL/SQL यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PL/SQL is completely portable dash transaction processing language। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लो परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी हाई परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाई परफॉर्मेंस।
PL/SQL is completely portable, high performance transaction processing language. Next question है, which of the following statement can be used to terminate a PL/SQL loop? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गो टू, ऑप्शन बी एग्जिट व्हेन, ऑप्शन सी कंटिन्यू व्हेन एंड ऑप्शन डी एग्जिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्जिट व्हेन। Exit when statement can be used to terminate PL/SQL loop. Next question है, which of the following is equivalent to multiple if-ELSIF statements? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लूप स्टेटमेंट, ऑप्शन बी फॉर स्टेटमेंट, ऑप्शन सी व्हाइल स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी केस स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीपल if-ELSIF statements. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to declare a record? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परसेंट रो टाइप, ऑप्शन बी परसेंट टाइप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परसेंट रो टाइप। परसेंट रो टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडेक्स फॉर अ रिवर्स फॉर लूप? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपर बाउंड, ऑप्शन बी लोअर बाउंड, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपर बाउंड। अपर बाउंड इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडेक्स फॉर द रिवर्स फॉर लूप। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कमेंट इन द PL/SQL? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमेंट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑप्शन बी द PL/SQL सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विथ डिलिमिटर्स यानी डबल हाइपन, ऑप्शन सी मल्टीलाइन कमेंट आर इनक्लोज्ड बाय स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉर द कमेंट इन द PL/SQL। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।